Good morning, students. Hope you understand the financial management of working of small scale industries and special focus on their working capital management. Now we are talking about a new concept that is a venture capital. Basically, what is capital? It is a fund employed in any business activity and most important factor of production, and no economic entity can function without capital. So, in venture capital, we are trying to arrange this capital. The concept of venture capital is very significant, and this innovation come in 20th century. It is generally considered as a synonym of risky capital. Venture capital is a new financial service that emergence of which want toward developing strategies to help a new class of new entrepreneur to translate their business idea into reality. Basically, venture capital is a risky capital. If we want to start any business and nobody is ready to fund our project at that time, but we have a good idea, we have a our idea have a good potential, then there is a venture capital which come forward to help us. Okay, the venture capital is a equity, you can say, is a equity support to fund a new concept that involve a high risk, at the same time have a high growth potential also. Venture capital is broadly implies an investment of long-term equity finance in high-risk project with a high reward possibilities. Basically, venture capital is the early stage financing of new young enterprise seeking a growth rapidly. Venture capitalists finance a high and new technology based enterprise where a bank and financial institution generally support proven technology with established market. As you see, if we going to bank, they will support only those technologies, those ventures which already prove themselves. But venture capital is there to provide the help to those which are unproven, which is not proved, but they need support and they have a potential they can prove. If they need a back support, that venture capital is giving them that back support. And nowadays venture capital is not only investing in a new high technology based business only, they are a social entrepreneurs also. Okay, so social venture capital is also promoting these days. uh, so if you have a social concept also which is very good, the way we have a venture capital also who interested in investing in that particular proposals also. Venture capital is also described as unsecured risk finance. Venture capitalists directly purchase equity shares of entrepreneur and participate in the management of the entrepreneur business. बेसिकली वेंचर कैपिटल जो है वो आपको एज ए पेरेंट, जैसे पेरेंट्स आपकी टेक केयर करते हैं, आपको चलना सिखाना और आपको अपने पैरों में खड़ा करना सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो आपको छोड़ते हैं कि अब नाउ यू कैन मैनेज योर सेल्फ। एंड सेम इज विद दिस, वेंचर कैपिटल भी आपको पहले जो है चलना सिखाता है। वो सिर्फ आपको फाइनेंस सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है। दे विल सपोर्ट इन योर मैनेजमेंट एक्टिविटी, दे विल सपोर्ट इन योर मार्केटिंग एक्टिविटी, दे विल सपोर्ट इन एवरी एस्पेक्ट। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, when you are making profit, you are converted into profit making venture, तब ये आपको जो है छोड़ते हैं। ओके, दे एक्ट एज अ पेरेंट ओनली। नाउ द stages of venture capital. Stages in venture capital is a seed money. You get a fund at low level when you have to prove your new idea. Then you have a startup when you are entering into marketing and a product development stage. Then first round finance, they will provide you early sale or manufacturing of fund. Then they give you second round financing for working capital and all. Then they give you third round financing like magazine finance.
दिस इज एक्सपेंशन मनी फॉर अ न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी. जब आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू नीड. एंड फोर्थ राउंड फाइनेंसिंग दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइक अ ब्रिज फाइनेंस. इट इज इंटेंडेड टू फाइनेंस व्हेन यू आर गोइंग टू पब्लिक. जब आप अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करने जा रहे हैं, उस समय जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दे गिव इन अ फोर्थ राउंड फाइनेंस. ओके, नाउ the features of venture capital. Generally, venture capital is investment which is done in a high-tech areas, technology-based areas, innovative ideas. Then it is a long-term startup. They invest not for a short run. They will invest for at least 6 to 7 years. And this investment is illiquid investment because they give you a money in the equity form and for 7 to 10 years. That's why it is not a liquid fund. And they invest in the form of equity share. Major part is in the form of equity share because they are also participate in your management. They support you in your management affairs also. And they have experts in technology and management areas. They provide you strategic input so that it help you to reduce your uncertainties in the business. Clear? They also encourage you, venture capital firm also encourage, nurture, or help the entrepreneur to grow because he has a limited resources and high level of risk. So venture capital is there to provide them the resources and to help them to face the risk. Investments by venture capital fund are predominantly made in equity as a share because the dividend can be delayed till the company start making a profit. So they provide fund in the form of equity as a shares. That's why they get a dividend. And sometimes it delayed till company make a profit also. Venture capital fund act as a co-partner of the entrepreneur business, share success and failure of the firm also. Now, venture capital process. The process is like deal origination, screening, evaluation, deal structuring, post-investment activity, and then exit. Basically, in deal origination, there are various venture capital funds which have originated from India as well as foreign countries. And it is essential for venture capital firm to have a continuous source of deal in order to survive and growth in the market. So first step is to originate the deal. Then they are do screening. In screening, it is done in a broad category. It's a preliminary screening stage. Basically, they are screening according to their broad criteria. Whether they broad criteria like if they have a limitation of fund. उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा जो 5 लाख से नीचे होंगे. ठीक है, तो वो सारी डील्स वही वाली पहले स्क्रूटनाइज कर लेंगे जो उससे लेस होगी. ठीक है, या फिर उन्होंने कहा कि वी विल गोइंग टू इन्वेस्ट इन ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो वो जितने भी उनके पास प्रपोजल होंगे उसमें से सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रपोजल को ही वो सिलेक्ट करेंगे. इफ दे हैव फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी तो दे विल फोकस ओनली बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट. तो मीन्स यहाँ पर वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं बिफोर एंट्रिंग इनटू एनी प्रोजेक्ट इन डिटेल. फाइन, देन दे हैव अ इवैल्यूएशन. इन इवैल्यूएशन में फिर वो इवैल्यूएशन इज अ ड्यू डिलीजेंसी प्रोसेस जहाँ पर वो बाहर से लोगों के सपोर्ट भी लेते हैं, अपनी टीम का भी सपोर्ट लेते हैं, जिससे वो पूरी ड्यू डिलीजेंसी करते हैं, पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर प्रपोजल की कि वेदर दे हैव अ प्रॉस्पेक्ट्स और नॉट. द सक्सेस रेट इज वेरी वेरी लो. अगर आपके पास 100 एप्लीकेशन आई है वेंचर कैपिटल के पास फंड की, तो ओनली 1 or 2 वेंचर आर देयर ओनली हु गेट अ फंड. ठीक है, तो इवैल्यूएशन स्टेज इनकी बहुत रिगरस होती है. वो क्रेडिट वर्थनेस देखते हैं एंटरप्रेन्योर की. मेन फोकस एरिया इज द आइडिया एंड द एंटरप्रेन्योर. Okay, then after finalizing,
कि किस इन प्रपोजल में वो फंड करेंगे, देन दे हैव अ डील स्ट्रक्चरिंग. In deal structuring, once the venture capital has evaluated the proposal and they found it to be a viable, then venture capital and entrepreneur come into the contract. वो स्ट्रक्चर करते हैं डील की किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा. ठीक है. तो इन डील स्ट्रक्चरिंग दे इंक्लूड लाइक आपके वेंचर कैपिटल्स के क्या राइट्स होंगे, कितना कंट्रोल करेगा बिजनेस, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, और किस तरीके से वेंचर कैपिटल एग्जिट होगा, किस फॉर्म में वो कैपिटल प्रोवाइड करेगा, एंड व्हाट आर देयर वेरियस माइलस्टोन्स आल्सो दे फिक्स इन दिस. ओके. Then post investment activity. In post investment activity, they look after investment, because they have done a huge investment, and they will help you in getting success. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस करने में आपको हेल्प करता है. मार्केटिंग हो, चाहे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, इन एवरी एस्पेक्ट दे नर्चर यू. एंड व्हेन दे फील कि नाउ यू आर इन द पोजिशन कि वो अब आपको छोड़ सके, ठीक है, तो वो आपका एग्जिट प्लान करना शुरू करते हैं. देन आफ्टर वी हैव अ एग्जिट ऑप्शन. और एग्जिट वो किस तरह से लेंगे, या तो वो आपके शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कराएंगे आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके. और यू कैन प्रमोट बाय बैक ऑल्सो. हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर खुद ही अपने शेयर्स वापस ले ले, या आप ट्रेड सेल करेंगे पब्लिक में. ठीक है. यू ऑल्सो डी इन्वेस्ट हिज होल्डिंग थ्रू ऑफर फॉर सेल टू अ पब्लिक, और बाय बैक बाय द इक्विटी बाय द कंपनी. ओके. तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. जनरली यहाँ पर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जनरली आपके बायबैक होता है, या फिर आप लोगों के दूसरे वेंचर कैपिटल को शेयर्स को सेल आउट कर दिया जाता है. ठीक है. क्योंकि इक्विटी में आफ्टर 6 to 7 years बाद जब आप कंपनी को छोड़ रहे हैं, तो आईपीओ इज द बेस्ट ऑप्शन. बट आईपीओ जनरली हर इंटरप्रेन्योर ऑप्ट नहीं कर पाता. ओके. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेंचर कैपिटल प्रोसेस ऑल्सो नाउ. And these processes are here in detail. Then name of some venture capital is IDBI, ICICI. These are the banks, but they have a fund also who act as a venture capital. SIDBI Venture Fund, Intel Capital, UTI Venture Fund Management Companies. You have heard about the companies like Redbus and Shadi.com. Okay, all these companies are the companies who get fund from the venture capitalist only. Clear? Now, next concept is angel investors. Angel investors are a wealthy individual who willing to invest own money in a business startup. Angel investors are an angel, you can say. It's a business and angels. Informal investor, you can say. Angel funder also. Private investors, you can say. A seed investor, you can say. These are the individuals who have very good in their financial support, who have a good financial base, and they provide capital for a business startups, usually in exchange of convertible debt or owner's equity. Angel investments bear an extremely high risk and are usually subject to reduction from future investment rounds. As such, they require a very high return on their investments also. Okay. And a large percentage of angel investment are lost completely when early stage companies fail. Professional angel investors seek investments that have a potential to return at least 10 or more times their original investment within 5 years. And though a defined exit strategy, such as a plan for an initial public offering or any acquisitions also. Fine. So, angel investors are the investors who give money before venture capital, you can say. देखिए, बेसिकली ये सारे इन्वेस्टमेंट टर्म्स जो होते हैं इंडिया में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लाइक सीड और एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी. द ओनली डिफरेंस इज ओनली द स्टेज, कि किस स्टेज में ये फंड कर रहे हैं.
एंजल इन्वेस्टर्स जनरली आपको उस स्टेज में फंड करते हैं जहां आपका आइडिया अभी प्रूव भी नहीं हुआ है। आपके दिमाग में आइडिया आया है अभी, बट इट इज़ नॉट प्रूव, इट इज़ नॉट टेस्टेड, तब वो फंड करते हैं। उन्हें वो आइडिया पे पैसा लगा रहे हैं कि हाँ ये आइडिया वर्थ वाइल, अगर है उन्हें लगता है कि यस दिस आइडिया कैन हेल्प देम टू गेट अ मोर प्रॉफिट, तब वो आपके आइडिया में फंडिंग करते हैं। क्लियर? Like this, see the difference between angel investor, venture capital and private equity. The stage, startup stage is the angel. अर्ली स्टेज जहां आइडिया प्रूफ तो हो चुका है बट अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, तब वेंचर कैपिटल कर रहा है। और मिड टू लेटर स्टेज में जहां प्रॉफिटेबल हो चुका है, जहां और कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है आपको लार्ज अमाउंट की, एट द ग्रोथ स्टेज, वहां आपके प्राइवेट इक्विटीज़ होते हैं जो आपको फंड करते हैं। ओके, सो द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आप देखते हैं दोनों का चेंज हो रहा है। इनिशियल स्टेज में आप लोग जो है 10,000 तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मिलियन। इन वेंचर कैपिटल्स में यू इन्वेस्ट इन अ फ्यू मिलियंस, एंड प्राइवेट इक्विटी में मोर देन दैट। जनरली एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके इक्विटी या डेप्ट में इन्वेस्ट करेंगे। वेंचर कैपिटल जो होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और कन्वर्टेबल डेप्ट में करता है। और प्राइवेट इक्विटी जनरली इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी विथ लिवरेज, sometimes it include a debt but limited. Then investment team, जनरली एंजल्स जो होते हैं वो आपके एंटरप्रेन्योर या पास जो फाउंडर्स हैं वो होते हैं। वेंचर कैपिटल में मिक्स हो सकते हैं, और प्राइवेट इक्विटी में जनरली आपके प्रोफेशनल्स होते हैं और बैंकर्स होते हैं। द लेवल ऑफ रिस्क इज वेरी 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 हाई इन अ फर्स्ट स्टेज, दैट इज एंजल और सीड इन्वेस्टमेंट स्टेज, बिकॉज यहाँ अभी आपका आइडिया भी प्रूफ नहीं हुआ है। द चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी. So the return in because risk is high, the return is very high in the angel stage as compared to venture capital and private equity. And industry focus is very from firm to firm, क्योंकि हर फंड जो वेंचर कैपिटल फंड आप बनाते हैं, हर फंड एक फोकस ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। जैसे माना आपने एक फंड बनाया द क्रॉप ऑफ 100 करोड़, आपने कहा कि ये 100 करोड़ सिर्फ सोशल वेंचर कैपिटल को ही फंड होंगे, तो आप जितना भी सोशल वेंचर कैपिटल होंगे उन्हें ही फंड करेंगे। मीन्स दे आर वेरी फोकस विद देयर ऑब्जेक्टिव, और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग उसी के बेसिस में होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपके फाउंडर्स, मार्केट शेयर, पोटेंशियल, इन सब के बेसिस में होता है इन केस ऑफ एंजल। And in case of venture capital, the revenue, margin, growth rate is also added. And in private equity, it's purely done on financial analysis. Okay. In next class, students, we will going to cover the concept of technology now. Okay. Thank you for the day.